थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन में देर आर वैरायटी ऑफ केसेस। यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड केसेस ले रहे हैं, लेकिन ये सारे केसेस जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली यूजफुल हैं। सो बहुत केयरफुली आप सारे केसेस को अपनी केस नोटबुक में कॉपी जरूर कर लीजिएगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट केस ऑफ कंपेयरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू डिस्क। हाउएवर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन आप सबको पता हाफ एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में गलती कर दी थी व्हेन इट वाज आस्क्ड इन जेईई मेन। It says the circular disc x of radius r is made from an iron plate of thickness t and another disc y of radius 4r is made from an iron plate of thickness t by 4. अब जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि थिकनेस से तो इंडिपेंडेंट होता है, थिकनेस बेवजह गिवन है। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आयरन गिवन है तो थिकनेस विल बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द मास ऑफ दीज डिस्क। देन द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एंड iy हमको निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, फॉर मटेरियल x के लिए जो मास होगा mx, this will be pi r square multiplied by t multiplied by density of iron. This is the mass we are going to use. And for material y अगर हम देखेंगे तो मटेरियल जो y का है उसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो मास हम कैलकुलेट करेंगे pi into 4r square multiplied by thickness t by 4 multiplied by density. This is the volume into density. We are calculating the mass. Now moment of inertia of x can be written as half m r square and moment of inertia of y is half m, this is mx, this is my multiplied by 4r whole square. So that's what we need to use, ix upon iy. This is what we need to check, the relation between moment of inertia ix and iy. So here you can write half gets cancelled out, r square gets cancelled out, so this gives mx upon 16 my. If I substitute the values, this is pi r square t rho divided by 16 pi into here this 4r square t rho. So pi r square t rho, pi r square t rho gets cancelled out. This comes out to be 1 by 64. So ix is equals to iy by 64. That's the result of this problem, the relation in ix and iy. Thank you, Poji. In this situation, it says forces on the inner and outer particles of a rotating annular ring. This is what we need to check. It says an annular ring with inner and outer radii r1 and r2 is rolling without a slipping with a uniform angular speed. That means here in this situation एक annular ring है जो ground के ऊपर roll कर रही है, जिसकी inner और outer दोनों radius given है. Inner radius is r1 and outer radius here is r2. This is r2 and inner radius here is r1. Now in this situation, it is asking the ratio of forces experienced by the two particles situated on the inner and outer parts of ring. सबसे पहली चीज इसमें given है कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से चल रही है, तो लीनियर स्पीड v will also be constant and that is equals to r2 omega, क्योंकि आउटर सरफेस पे जो रोलिंग हो रही है this with the radius r2 and the ring is rotating at an angular speed omega. Now in this situation, अगर ये यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड से जा रही है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, then the center can be considered as an inertial reference frame. And in this situation with respect to the inertial reference frame, अगर हम ये inner और outer points consider करें इसी ring के, inner radius r1 है, it is rotating at an angular speed omega, outer radius is r2 which is also obviously rotating at angular speed omega, क्योंकि डिस्क तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ओमेगा सब पार्टिकल्स का सेम रहता है. So forces की हम बात करें तो on these particles for uniform circular motion for UCM, F1 is the force on the inner particle that can be written as m omega square r1 and F2 on the outer one can be written as m omega square r2. Simply if we take the ratio तो F1 by F2 gives r1 by r2. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ के आ गए थे नेगेटिव मार्किंग के डर से कि वी आर नॉट एबल टू मैनेज विद दिस क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी सो सिंपल. सो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना था कि यहाँ पे रोलिंग मोशन में भी क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इट इज मूविंग एट अ constant speed, so particles will only be experiencing the centripetal force due to which these particles are in circular motion. Thank you, Poji. In this case, we are going to talk about adding objects on a rotating body. So generally आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, कभी भी किसी rotating body पे कोई object को attach किया जाता है, add किया जाता है, you need to make use of angular momentum conservation. That's what the basic question and a case we are going to talk upon. It says a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. And it says two objects each of mass m are gently attached to the opposite ends of a diameter of the ring.
So new angular speed we are required to calculate. So if we draw the situation, this is a ring which is revolving about its central axis at an angular speed omega. Its mass is m and its radius is r. Now at the two opposite diameters, two masses are added, which are each of mass m and m. So when the masses are added over here, certainly its moment of inertia changes, so angular speed has to change. Now in this situation, initial moment of inertia was that of only ring, which was mr square. So initial angular momentum of this system can be written as I initial omega, which is mr square omega. Now after adding masses, if we calculate the final moment of inertia of the system, then for the ring we can write its moment of inertia as mr square, plus for the masses it is 2 mr square. Now final angular speed omega we need to calculate, so we can write by conservation of angular momentum. सेम लॉजिक कई क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं. तो विल राइट आई इनिशियल ओमेगा इज इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल. सो हियर इट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू एम प्लस 2mr स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल. This gives us the value of omega final is equals to r square gets cancelled out, and this gives us m omega upon m plus 2m. That's the result of this question. Thank you, Poji. Students, there's another case of a mass attached to a pulley. There are many such cases in which from a pulley a body is hanging और body के साथ pulley में rotation होता है, and we need to make use of Newton's laws to analyze the acceleration, angular speed, displacement, कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, by using dynamics we calculate acceleration और angular acceleration, और जहाँ पे displacement, velocity, angular velocity या time की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको kinematic speed equations को use करना होगा. Let me analyze here. It says a mass m hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. So situation draw करते हैं पहले. Say we are having a pulley which is say fixed from the ceiling या कहीं से भी fixed है, और इस पे एक string wrap हो रखी है और यहाँ से एक mass m को hang कर रखा है. The pulley is of radius r and pulley also has a mass m. It says assume pulley to be a perfect uniform circular disc. So at the acceleration of mass m we need to check if a string does not slip over pulley. So if this goes down with acceleration a, then the pulley has an angular acceleration alpha which is given by a by r. क्योंकि पुली का जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसी एक्सेलरेशन से मास नीचे गिरेगा. सो इन दिस केस हियर टेंशन इज टी ऑन दिस पुली, टेंशन इज टी. वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन फॉर मास. इट इज mg minus t is equals to ma. For pulley, it is the tension torque because of which pulley is having angular acceleration. This T multiplied by R is equals to I alpha. I is half mr square multiplied by angular acceleration alpha. So here we need to check the acceleration of this mass. So alpha I can write, this R gets cancelled out. I can write T is equals to half m. R alpha I can write as acceleration A. So this is A. So using these equations 1 and 2, if I add 1 plus 2, this gives me mg is equals to 3 by 2 ma. M gets cancelled out. The value of acceleration I'm getting is 2g by 3. That's the result of this problem. So mainly it is about writing the equations for the given situation. अगर आप situation को क्वेश्चन पढ़ के डिकोड कर लेते हैं और situation को एनालाइज करके equations बना लेते हैं, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ equation को सॉल्व करना है and you are getting the final result.